Hello, good morning, students. I am going to explain the some questions of exercise 1.4. So let us understand the first theorem which will be used uh, while discussing the questions. Uh, the property is any rational number. If you are given any rational number, you know that rational number is always in the form p upon q. When p and q are the integers, q is not equal to 0. You know that all rational numbers are in this form only. So what about the p? P is the numerator and q is the denominator. So what to do? Because you know rational number, when it is expressed in the form of decimal, it will give you any one of the two types of decimal numbers. Either it will be expressed in terminating decimal, or if not, then non-terminating repeating decimal. So without actual division, how to know that the particular rational number will represent terminating decimal or non-terminating repeating decimal? So it doesn't depend on numerator, it depends on denominator. But note one thing, that rational number, before you apply this theorem, this rule, you must first make sure that given rational number should be in its lowest form, should be in standard form. Standard form means p and q should not have any common factors. So make sure it. Then you just notice what is q. You take the denominator, that is q, and you factorize it as per FTA, fundamental theorem of arithmetic. When you factorize q, you will come to know. You just watch its prime factorization. Write the prime factorization of q. So let us understand this thing with the help of the given example. Example number 1. What type of decimal expansion 17 upon 8 will have? So first of all, what we have to check is that whether 17 upon 8 is in its lowest form or not. Yes, it is in lowest form. Yani 17 upon 8, it cannot be reduced further in lowest form, because 17 and 8 they don't have any common factor in them, so it is in standard form. Now note what is q. Here p is 17, we have no work with the 17 with the numerator. Now what is q? Notice q. What is q? Q is 8. So you just factorize it. You factorize q. Q is, when you factorize q, then you will get 8 equal to 2 into 2 into 2, or as per FT you will write it as 2 cube. So think of the 2 cube. 2 cube, it is in the form, is it in the form 2 to the power m and 5 to the power n? So what about m and n? M and n are non-negative integers, means it may be 0, 1, 2, 3 and so on. So 2 to the power cube, 2 to the power 3 means m is 3, and only if there is no 5, but we can write 5, we can introduce 5 writing by 5 to the power 0, because you know that 5 to the power 0 is 1. So in fact the q is in the form 2 to the power m and 5 to the power n. And the factors of q are either only 2's or only 5, yeah, only the pair of 5 and 2. Then the given rational number will represent the terminating decimal, otherwise not. So it will have terminating decimal. Now how to check? You can also check it by dividing. You actually divide 8 17 by 8. 17 by 8, you can divide it. Just a minute, I am writing again. You just divide 17 by 8, so you will get the answer. You will get this answer as this 2.125.
and it means you will get a remainder 0. So it is a terminating decimal. Terminating decimal means after the decimal you will get finite number of digit. That is the terminating decimal. And non-terminating repeating means when you divide the numerator by denominator, you will get the quotient in the decimal form where the after point the digits or the pair of digits or the block of digits will start repeating. So that will be known as non-terminating but repeating decimal form. Now if we see the example number 2, what is the example number 2? What type of decimal expansion 23 upon 300 will have? So first of all we must check that whether the given rational number is in its lowest form or not, is in its standard form or not. If is there any common in them, then we have to reduce them. We have to cut numerator and denominator by the common factor, and we have to write it in standard form. Then only we will note the Q. So here P is 17 and Q is 300. So 300 is to be factorized as per FTA. So when you factorize 300, you will get the factor form like that: 2 square into 5 square into 3. So here 2 ke power something we are getting like 2 to the power m, 5 to the power n we are also getting, but we are also getting the extra factor as 3, which it should not be. So because of this 3, presence of 3, this rational number will not be the terminating decimal, but it will be non-terminating and repeating decimal. Means when we divide this 23 by 300, we will not get the no matter how long we will divide, we will not get remainder 0. So it will give you a non-terminating and repeating decimal. So without actual division, we are finding this result, that whether the particular rational number will be expressed in terminating decimal or non-terminating repeating decimal. So note that you just only check two things: whether the given rational number is in its lowest form or not, because you have to take the given rational number in lowest form first. When it is in lowest form, then write Q, factorize it as we factorize, and express is as the fundamental theorem of arithmetic. So if you find only the 2's and 5's, if you find only 2's and 5, in its factor form, no other factor, then you write the answer as terminating decimal. Otherwise, if you find any other factor, as we are finding in this example also, then you will write that it will represent non-terminating repeating decimal. So let us look at the given question number 1 in exercise 1.4. You can see this all rational numbers. For example, 13 upon 3125. So you know that 13 is a prime number, so there is no common between 13 and 3125. So you just note what is Q here. In this case, Q is 3125. So in this problem, you just note it down 3125. It is Q. So Q is 3125, and you factorize. When you get, if you get the only 2's and only 5 in the factorization form, no other factor, then you write it is terminating. Otherwise you write it as non-terminating repeating. Next question is 17 upon 8. We are already discussed like this question. There are some question which is already given in factorized form. You also you can do 64, third question, 64 upon 455. So you can also write Q and factorize it, and you just check whether the factorization form of Q is in the form of 2 to the power m and 5 to the power n or not. If it is not, then non-terminating repeating answer will come. If it is in that form, then terminating answer will come. Now you see that in question number 6, you see in question number 6 like that. In question number 6, so you find that in that you are already given in the factor form, and you already given Q as, you need not to factorize it, already factorized 2 to the power 3 and into
5 square. So it is in the form 2 to the power m and 2 to the power n. So that's why directly you can write it is terminating. So it is terminating, isn't it? You need not to factorize because it is already in factor form. So it is terminating. So where it is already factorized, you not to do, you just have to look on that and check whether it is followed by the rule or not. For example, in seventh part you are given a rational number like 129 upon 2 square into 5 to power 7 into 7 to power 5. So it's already in factor form. You see that in this particular problem, you find that what is q? First of all, 129 is not factorized. So because it is a factor of 9 plus 2 11 plus, it is a 129 is divisible by 3, but there is no 3 in the denominator, so it is already in lowest form. So only the factor of q, you just might have that factor of q is here already, it is in factor form. It is written as per FTA. So 2 square, it is 5 to power 7, it is 7 to power 5. So it's all right. Now it is not in the form of 2 to the power m and 5 to power n, because 7 is extra here. So it will represent non-terminating repeating decimal. I think you must have understood this. In 7, in 7, 6 upon 15, or in 4th, you see that in 4th or in 16 upon 15 upon 1600, you see that there is something common in that. So you cannot get answer from considering q as 1600. Not that. First you have to reduce it into lowest term. You have to reduce it into lowest term, because it is not in lowest term. So 15 upon 1600, first you have to reduce it as lowest term. 5 3s are 15 and 5 3s are 15 and 5 2s are 10, or then 0, 320. So you will write it as 3 upon 320, right? So here q will be 320, not 1600, because 15 upon 1600 was not written in its standard form, because 15 and 1600 having 5 as a common factor. So you divide it first both by 5 and you get the rational number in its standard form, which is 3 upon 320. Now q is 320. So you just factorize 320, then you will get the answer, correct answer, whether it will represent the terminating or non-terminating. I am writing it as q. You got the q is equal to 320. You know that. So it will be written as, when we factorize 2 to the power 6 into 5 to power 1. So yes, it is in form. Yes, it is in form of 2 to the power m and 5 to power n. Therefore, it will represent the terminating decimal. So you have to do like that. Now I know that you might have understood. Like also in 8th part, 6 upon 15, it is also not in its standard form. You have both 6 and 15 are the multiple of 3. So 3 is the common factor in them. So first you divide this number by, it is not in its standard form, so you have to divide it like 6 by 15 first. Because if you don't divide, then you will get wrong answer, because 15, the factor of 15 is 3 and 5. So you will get here 5 is there, but 2 is not there, 3 is there, 3 is extra, so it is not in the form of 2 to the power m and 5 to the power n. That's why it is your answer will be non-terminating repeating, which is wrong. So you should not take it q as 15, because first you have to reduce it into lowest form. So what will be the lowest form? 3 2s are 6 and 3 5s are 15.
and it is 2 upon 5. So Q is 5 to power 1. It means 2 to the power 0 and 5 to the power 1. So it is in the form 2 to the power m and 5 to the power n. So it will represent a terminating decimal. So it is easy to understand, isn't it? I think that you might have understand and how to solve, how to understand, how to explain the question number 1 from exercise 1.4. Now I am coming to the next question. Next question is the question number 3 from the book I have taken. So you know what is written in this question? The following real number have decimal expansion as given below. Okay, in each case, so in the starting you see that it is written real numbers. So real number may be either rational or irrational. So decide whether they are rational or not. First we have to answer that. Whatever the numbers are given, they are the real first. Then we have to check whether they are rational or irrational. Then if they are rational and of the form P upon Q, if they are rational then they will be in the form of P upon Q. So what can you say about the prime factor of Q? मतलब हमें ये बताना है कि अगर वो रैशनल नंबर है तो P अपन Q की फॉर्म है तो उसका Q की फॉर्म क्या होगी, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि उसका अगर रैशनल नंबर होगी तो उसके जो रिप्रेजेंटेशन होंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे, वो दो टाइप से होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कन्वर्ट होगा। तो उन दोनों के लिए Q से ही तो पता लगेगा हमें। अगर Q इक्वल टू सपोज Q इक्वल टू 2 to the power m और 5 to power n के फॉर्म में है ना, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या तो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म से हम चेक कर लेंगे इसको। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है भाई, 43.123456789, आगे डैश 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 कुछ नहीं है, ना बार लगा हुआ है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में, क्यू के बारे में क्या डेफिनेशन दी हुई है हमको अभी जस्ट हमें जो डिस्कस किया कि जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो इससे मैच करती है। 2 to the power m यानी 2 के पावर समथिंग आता है, इंक्लूडिंग 0 आल्सो, पावर 0 भी ले सकते हैं, और 5 to पावर भी पॉजिटिव इंटीजर आता है, यानी 5 to पावर n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर इस फॉर्म और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आता, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर है और ये किस टाइप का है, ये है टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका रैशनल नंबर की फॉर्म जो P अपन Q है वो लोवेस्ट फॉर्म में आने के बाद किसको मैच करेगी, तो ये उसकी फैक्टर फॉर्म इसको मैच करेगी। उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो या तो ओनली 2 आएंगे या फिर ओनली 5 आएंगे, और मतलब उससे मैच करेगा, उसके इक्वल होगा। तो Q की फॉर्म ये रहेगी इस पहले वाले पार्ट में। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ये क्या होगा। तो लास्ट है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन पे अगर नज़र डालो तो आप देखोगे कि इसमें किस तरह का डेसिमल है। पहले क्या है, 3 तरह के जो डेसिमल होते हैं उसमें आपको कैटेगरी जो है 3 कैटेगरी है। टर्मिनेटिंग जो हमको पहले ही पार्ट में दी हुई है ना, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो देखते हैं ये है कि नहीं, या क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि डैश लगा हुआ है, तो अब इसके 2 चांसेस हैं, या तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो अब इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। 0.12 तो 1 भी रिपीट नहीं हो रहा, 120 चलो 120, फिर आ गया 120 नहीं आ रहा, लेकिन तो ये तो 120 फिर 12 फिर 00 फिर 12000, कुछ भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है कि जो इरेशनल नंबर तो वैसे ही P अपन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो इसके बारे में Q में कोई कमेंट ही नहीं होगा। तो जो सेकंड नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। तो Q के बारे में कुछ कमेंट करने का हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में क्या है कि साथियों मैं जो है ये लगाना भूल गया, इसमें मतलब लगाया था मैंने जब कंप्यूटर टाइप किया था तो ऊपर में बार,
पर ये बार लाइन इधर उधर खिसक गई जब मैंने इसको इधर सेंड किया तो आप इसको बार पढ़ें। मतलब ये नंबर इस तरह से है, मैं आपको बताऊं, ये नंबर है 43.123456789 और ये पूरे पे बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है मतलब है ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी क्या है, ये भी पी अपन क्यू की फॉर्म में, यानी कि भी रैशनल नंबर है। और लेकिन इसमें जो क्यू की जो ये होगी फॉर्म, ये इसके बराबर नहीं होगी 2 to the power m और 5 to power n के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। कोई भी जो भी रैशनल नंबर के कन्वर्ट करने पर ये डेसिमल फॉर्म आई है, ये जो फॉर्म आई है ये आई है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये तभी आती है जब q की जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर फॉर्म है, वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं मिल रही होती है। क्योंकि अगर ये इसके फैक्टराइज फॉर्म ओनली 2s and 5 के फैक्टर मिल रहे होते हमें, तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। पर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 तक पे बार लगा हुआ था। क्वेश्चन में आप देखना बुक में, तो वहाँ पर आपको बार मिलेगा लगा हुआ। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट और थर्ड ये रैशनल नंबर है, लेकिन पहला वाला टर्मिनेटिंग है, इसलिए उसका जो क्यू का आंसर आएगा वो आएगा कि इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n। और जो थर्ड वाला है वो उसमें q विल नॉट बी इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power m and 5 to the power n। तो ये फर्स्ट और थर्ड का मामला हुआ। सेकंड, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये रैशनल नंबर है ही नहीं। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो इसके जो फॉर्म पी अपन क्यू है ही नहीं, तो इसमें क्यू का आंसर हमारे पास कुछ कमेंट करने का ही नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप 1.4 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर सकते हो, और आप कंप्लीट कर लेना। और कोई भी जब आपका कोई डाउट होगा वो हम जब मिलेंगे क्लास में तब क्लियर करेंगे, या जब हम कोई वीडियो मीटिंग करेंगे तब उसको हम क्लियर कर लेंगे। उसकी चिंता मत करना। अभी जो आपको समझ में आता है क्वेश्चंस इजी, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, क्लास वर्क में कर लीजिए। मैं समझा रहा हूँ, जो बच जाते हैं वो सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं जो बच जाते हैं। जो मैंने समझाया उसके अनुसार कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताए, तो वो समझ लीजिए आपको होमवर्क में करना है। ओके, दिस इज़ अनफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।